या टोटल क्वालिटी मैनेजर, तो वो इस धरती को यूनाइट कर देगा और बदल देगा। यहाँ एक बालक है, वो कह रहा है कि आई एम ए मेटेरियल बीइंग, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम ए डिवाइन बीइंग। मैं सबसे पहले तो भौतिक प्राणी हूँ, फिर मैं सामाजिक प्राणी हूँ, एक मानवीय प्राणी हूँ, मानव जगत का सदस्य हूँ, और तीसरी चीज़ है मैं डिवाइन एजुकेशन, मेरे अंदर आत्मा है। तो ये तीनों चीज़ें हैं। वन डे आई विल यूनाइट द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड एजुकेशन ऑफ ऑल द थ्री रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। ये तीनों रियलिटी से मैं एक दिन दुनिया एक कर दूंगा। वन डे आई विल यूनाइट द वर्ल्ड, एक दिन दुनिया एक करूंगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगा और विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊंगा। तो ये इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए इसे? मैटेरियल एजुकेशन, ह्यूमन एजुकेशन और डिवाइन एजुकेशन, तीनों ही जरूरी हैं। इनका संतुलित ज्ञान बहुत आवश्यक है। भौतिक शिक्षा माने अंग्रेजी, भूगोल, गणित, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, लैंग्वेज, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपके विषय हों, उन विषयों का ज्ञान आपको उच्च कोटि का हो, और बी एड विद क्लासेस थ्रू हार्ड वर्क and to merit, and every child should strain every nerve to acquire both inner and outer perfections, for the fruit of human tree hath ever been and will ever be perfections both within and without. It is not desirable that a man be left alone without knowledge or skills, for he is then but a barren tree. Therefore, so much your capacity and capability allow, you must deck the tree of a being with the fruits such as knowledge, wisdom, and it must broaden the child's perspective to globalism. तो प्यारे बच्चों, आपको बचपन से ही ये चीज़ें सीखनी है कि आप बी हेड ऑफ क्लासेस थ्रू हार्ड वर्क एंड टू मेरिट। तो अपने क्लास में अव्वल आओ, मैथमेटिक्स में भी, इंग्लिश में भी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, हर विषय में। तो स्ट्रेन एवरी नर्व। और चार चीज़ें आज के युग में बहुत ज़रूरी हैं। नॉलेज, रटा हुआ ज्ञान नहीं, क्रैम्ड अप ज्ञान नहीं, वो तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो रटा हुआ तोते की तरह आपने मकदब कर लिया तो ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान तो जिन खोजा तिन पाइयाँ गहने पानी बैठ। ज्ञान तो गहराई में जाके मिलता है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या जूलॉजी हो, बैठने हो, तो उसका गहन अध्ययन करके, उसको समझ के। तो ये समझा हुआ ज्ञान आपके काम आता है, न कि रटा हुआ। तो नॉलेज हो, और फिर उसके बाद विजडम। विजडम क्या है? प्रॉपर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाइजली अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसी ऑफ सिचुएशन इज द विजडम ऑफ ए मैन। तो मनुष्य को बुद्धिमान बनना है तो विजडम भी चाहिए, और विजडम माने प्रॉपर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो ये विजडम है। तो ये बुद्धिमत्ता भी हर बच्चे को आनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है स्पिरिचुअल परसेप्शन। अब शरीर तो हमारा भौतिक है, तो भौतिक शरीर है, 50-60 किलो वजन है इसमें, तो ये तो भौतिक हुआ। लेकिन इसमें जो सूक्ष्म आत्मा है, परसेप्शन है, दृष्टिकोण है हमारा, वो आध्यात्मिक हो। तो हमारा स्पिरिचुअल परसेप्शन हो, क्योंकि यदि सोच और चिंतन और दृष्टिकोण भी भौतिक बन जाए तो हम जानवर बन जाएंगे, इंसान नहीं रहेंगे। तो जानवर बन जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी सोच आध्यात्मिक हो, चिंतन हमारा आध्यात्मिक हो, तो संतुलन बनेगा जीवन में। और फिर चौथी चीज़ है एलोक्वेंट स्पीच। ये बहुत ज़रूरी है, और आज के ज़माने में एलोक्वेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया ग्लोबल बनती जा रही है, एक ग्लोबल विलेज है। सारे दुनिया में आज कहीं भी जाइए तो इंग्लिश पढ़ाई जाती है। यहाँ तक कि जर्मन, फ्रेंच और रशिया में भी इंग्लिश, और स्पेन में भी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। हर जगह इंग्लिश सरकारें भी पढ़ा रही हैं, और माँ बाप भी अपने स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल इंग्लिश मीडियम के खुल रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इंग्लिश का ज्ञान। और उसमें एलोक्वेंस, आपकी स्पीच फ्लॉलेस हो, फ्लुएंट हो, बोल्ड हो, ल्यूसिड हो और एक्सप्रेसिव हो, और आप एलोक्वेंट हो स्पीच में, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चार चीज़ें हैं, नॉलेज, विजडम,
स्पिरिचुअल परसेप्शन एंड एलोक्वेंट स्पीच। आज की 21वीं शताब्दी में सफल होने के लिए आपको 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ज्ञान आपके पास समझा हुआ हो, तो ज्ञान की गहराई में आपने जा कर के ज्ञान प्राप्त किया हो। तो एक तो नॉलेज और विजडम, प्रॉपर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज द विजडम ऑफ ए मैन। नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, और चौथी चीज़ है एलोक्वेंट स्पीच। ये 4 चीज़ें, और आपको स्ट्रेन एवरी नर्व टू एक्वायर बोथ इनर एंड आउटर परफेक्शंस और बी हेड ऑफ क्लासेस थ्रू हार्ड वर्क एंड टू मेरिट। हार्ड वर्क से और टू मेरिट से आप क्लास में अव्वल आओ, टॉप करो। तो यहाँ पर ये नॉलेज, विजडम, ये सब है। तो मटेरियल एजुकेशन, ह्यूमन एजुकेशन और डिवाइन एजुकेशन। ह्यूमन एजुकेशन ये है कि आपके घर में दादा दादी हैं, उनके आप चरण स्पर्श करो, माता पिता के चरण स्पर्श करो। यहाँ से लौट के जाओ तो माता पिता के चरण स्पर्श करना, दादा दादी के चरण स्पर्श रोज करो। तो कहे हम सीख के आए लखनऊ से, मैकफेयर में गए थे, तो माता पिता कहेंगे कि जो पैसे हमने खर्च किए वो वसूल हो गए, हमारा बच्चा अच्छे ख्यालात का बन गया है। जो मम्मी पापा ने पैसे आपको खर्च किए हैं आपके यहाँ आने जाने में और तमाम खर्चे होते हैं, खुश हो जाएंगे कि बेटा हमारा अच्छी बातें सीख के आया है। तो ये ह्यूमन एजुकेशन है। बड़े भाई बहन हो उनका सम्मान करो, बराबर वाले हों तो उनसे मित्रता करो, छोटे हों उनको प्यार करो। तो समाज, आपका परिवार एक लघु समाज है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी है। उसमें आप पूरे परिवार में मिलजुल कर रहें और पूरे परिवार के एक अच्छे सदस्य बने। दादा दादी और माता पिता, बड़े भाई बहन सब कहें कि हमारा बेटा तो बहुत महान है, ये तो संसार का सबसे अच्छा बेटा है, ये हमारी बेटी संसार की सबसे महान बेटी है। जब आप उनका सम्मान करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगे, उनके आशीर्वाद आपको फलीभूत होंगे। तो ये ह्यूमन एजुकेशन और डिवाइन, ईश्वर की शिक्षाएं। यहाँ पे देखो एक बालक है, ये टोटल क्वालिटी पर्सन बनना चाह रहा है, टोटल क्वालिटी मैनेजर TQM। तो इसने क्या किया है ताकि धरती पर डिवाइन सिविलाइजेशन स्थापित कर सके। तो इसने अपने आप को जोड़ लिया इस दिव्य परमात्मा से, यहाँ पर एक बना दिया है। ऐसा कोई परमात्मा का स्थान नहीं है, परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन ये बनाया है बच्चों को समझाने के लिए कि ये एक दिव्य लोक है। यहीं से 5000 वर्ष पूर्व गीता का ज्ञान आया, जिसमें था न्याय की शिक्षा, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और यहीं से 2500 वर्ष पूर्व त्रिपिटक आई बुद्ध की आत्मा में, और जिसमें था इक्वालिटी, समता। और यहीं से 2000 वर्ष पूर्व बाइबल आई यीशु मसीह की आत्मा में, जिसमें था कंपैशन या करुणा। और यहीं से होली कुरान शरीफ आई 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब की आत्मा में, जिसमें था भाईचारा। और यहीं से 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव जी की आत्मा में गुरु ग्रंथ साहब आया, ट्रू सेक्रीफाइस या सच्चा सौदा आया। ये 500 वर्ष है, 550 गलत है। और यहीं से 200 वर्ष पूर्व किताब एकदस आई बहाउल्लाह की आत्मा में, और उनकी कोई तस्वीर नहीं है, तो हमने उनके बेटे अब्दुल बहा की तस्वीर लगाई है। ये अब्दुल बहा उनके इंटरप्रेटर थे अपने पिता की शिक्षाओं के। इनका था यूनिटी ऑफ हार्ट, हृदय की एकता। तो ये सारे गुण बच्चे ने अपना लिए, तो इसको टोटल क्वालिटी पर्सन बन गया, टोटल क्वालिटी मैनेजर। इसमें 3 चीज़ें और बाउल्ला साहब ने कही हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस एंड टू फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप अमंग्स्ट मैन। दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रोग्रेसिव रेवलेशन मीन्स religious truth is revealed by God progressively and cyclically over a time through a series of divine teachers, and the teachings
are tailored to suit the needs of different ages and places of their appearance. और तीसरी बात उन्होंने कही, all the revealed books of God are unerring and collected wisdom that are sent by one God as required from age to age to open the mental locks of mankind and to cure the maladies of the age. तो ये basic purpose of all the religion, जो मूल उद्देश्य है सब धर्मों का, is one. वो क्या है? To safeguard the interest and promote the unity of the human race. तो मानव हितों की रक्षा करना और promote the unity of the human race, पूरी मानव जाति में एकता पैदा करना, foster the spirit of love and fellowship amongst men. तो ये हर धर्म का उद्देश्य है to foster the spirit of love, प्रेम का एक आपस में प्रेम करना और fellowship amongst men. तो ये हर धर्म का उद्देश्य है. और ये युग युग में किताबें आई, एक साथ नहीं आई, एक दिन में नहीं आई. ये 5000 वर्ष पूर्व गीता आई, तो 2500 वर्ष पूर्व त्रिपिटक आया, तो 2000 वर्ष पूर्व बाइबल आई, तो 1400 वर्ष पूर्व कुरान शरीफ आई, तो 500 वर्ष पूर्व नानक जी की आत्मा में गुरु ग्रंथ साहब आया, तो 200 वर्ष पूर्व किताब एकदस आई. तो ये प्रोग्रेसिव रेवलेशन है. प्रोग्रेसिव रेवलेशन मीन्स द रिलीजियस ट्रुथ is revealed by God progressively and cyclically over a time through a series of divine teachers, and that their teachings are tailored to suit the needs of different ages and places those revealed. So progressive revelation मानी है, the religious truth is revealed by God progressively and cyclically. ईश्वर के द्वारा ये युग युग में cyclically और progressively and cyclically over a time through a series of divine teachers, and that their teachings are tailored to suit the needs of different ages. जो teachings इन किताबों में हैं वो tailored to suit भगवान ने इस तरह की भेजी जिसकी मानव जाति को उस युग की आवश्यकता हो. suit the needs of different ages and places of their appearance. जिस स्थान पर आई उस स्थान पर उसी भाषा में ज्ञान आया और वो ट्रांसलेट होके सारे दुनिया में फैल गया. तो ये जो किताबें हैं युग युग में आई हैं. और तीसरी बात कही, ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग एंड कलेक्टेड विजडम. ये सारी किताबें, इनमें कोई त्रुटि नहीं है. यदि सारे संसार के सारे विद्वान मिल जाएं और गीता में और कुरान शरीफ में और बाइबल में या गुरु ग्रंथ साहब में या त्रिपिटक में या किताब एकदस में या किताब अजाबिस्ता में कोई कमी निकालना चाहें, कोई कॉमा फुल स्टॉप लगाना चाहें, कोई घटाना बढ़ाना चाहें, नहीं कर सकते, क्योंकि किताबें किसी मॉर्टल प्राणी की नहीं है, किसी अवतार की लिखी हुई नहीं है. ये प्राणी, ये तो सब परमात्मा से आई है, दिव्य लोक से आई है. तो इनमें कोई त्रुटि नहीं है. ये एक तो अनएरिंग है और कलेक्टेड विजडम है. ये संग्रहित ज्ञान है. कलेक्टेड विजडम किसने कलेक्ट की? परमात्मा ने. इनका ऑथर कौन है? इन किताबों का लिखने वाला कौन है? परमात्मा. तो किसने रिवील किए हैं? ये परमात्मा ने. एक परमात्मा है जिन्होंने किताबें सब भेजी हैं. तो ये ऑथर परमात्मा है. उसने सारी बुद्धिमत्ता मानव के लिए जो ज़रूरी होती है मानव कल्याण के लिए उन किताबों में भर दी है. इट इज़ द बुक्स ऑफ विजडम. काहे के लिए? एज रिक्वायर्ड फ्रॉम एज टू एज टू ओपन द मेंटल लॉक्स ऑफ मैनकाइंड एंड टू क्योर द मेलेडीज ऑफ द एज. यहाँ पर तो फिर बच्चे को गुड एंड स्मार्ट दोनों बनना है. प्राइड ऑफ ह्यूमन रेस बनना है. यदि गुड बनेगा, पहले गुड बने तब स्मार्ट बने. आजकल हमारे बहुत सारे स्कूल बच्चों को स्मार्ट बनाते हैं. गुड भी बनाना चाहिए. तो गुड बने, स्मार्ट बने तो क्या बनेंगे बच्चे? प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति का गौरव बनेंगे. और क्या बनेंगे? गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड, पूरी मानव जाति के लिए ईश्वर का उपहार बन जाएंगे. और क्या बनेंगे? पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इस धरती की रोशनी बन जाएंगे. इसके लिए क्या चीज़ चाहिए? नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन, एलोक्वेंट स्पीच, यूनिवर्सल वैल्यूज, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द वर्ल्ड एंड एक्सीलेंस इन ऑल थिंग. पॉजिटिव एटीट्यूड हर बच्चे को डेवलप करना चाहिए. लीडरशिप स्किल डेवलप करनी चाहिए. फुल कमिटमेंट एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट,
और बच्चे अजाइल हों, एक्टिव हों, फायर साइटेड हों, विजनरी हों, गोल सेटिंग कॉम्पिटेंसीज हों, अम्बिल एंड टॉलरेंट हों। प्यारे बच्चों याद रखो, ह्यूमिलिटी एक्सॉल्टेड मैन to the heaven of glory and power, while pride abaseth him to the depth of wretchedness and degradation. तो ह्यूमिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ है टॉलरेंस। गॉड विल इंक्रीज द रिवार्ड ऑफ देम दैट एंड्योर विद पेशेंस इन द पाथ ऑफ गॉड। इफ एनीवन रिवाइल यू और ट्रबल टेच यू इन द पाथ ऑफ गॉड, बी पेशेंट एंड पुट योर ट्रस्ट इन हिम हु हियर इट एंड हु सी इट। तो परमात्मा उनका इनाम बढ़ा देगा जो धैर्यपूर्वक सहन करेंगे। तो अम्बिल एंड टॉलरेंट हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, इमोशनली स्टेबल हो, नोबल एंड लॉ अबाइडिंग हो। कंसल्टेशन बच्चे को आना चाहिए, परामर्श करना बजाय बहस मुबाहिसे के। स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, लॉजिकल टेम्परामेंट हो, क्यूरियस एंड इमेजिनेटिव हो। हर बच्चे को यूथफुल एंड ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ें बच्चे सीख लें तो टोटल क्वालिटी पर्सन बनेंगे। यहाँ एक बल्ब है, ये पावर हाउस से जुड़ गया तो रोशनी आ गई, तार टूट गया तो अंधेरा आ गया। यहाँ एक बच्चे ने अपने आप को ईश्वर से जोड़ दिया, दिव्य लोक से, तो वो क्या बनेगा? रैशनल, विचारवान। और क्या बनेगा? वाइज, बुद्धिमान। और क्या बनेगा? गॉडली, ईश्वरीय। और क्या बनेगा? गुड, अच्छा इंसान। और क्या बनेगा? टोटल क्वालिटी पर्सन, TQP। और क्या बनेगा? टोटल क्वालिटी मैनेजर, TQM। लाइक ए डिवाइन एंजल, ए गुड ह्यूमन बीइंग इज ए ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी। और यदि कहीं तार टूट जाए दिव्य लोक से तो क्या बनेंगे? ये दो बच्चे हैं, इन्होंने अपने आप को ईश्वर से नहीं जोड़ा और इन्होंने भौंकता हुआ कुत्ता अपना गुरु मान लिया। वो जैसे कुत्ता भौंकता है उसे एक दूसरे पे जबड़ा पकड़ लिया और गालियां बक रहे हैं और भौंक रहे हैं, बार्किंग डॉग की तरह, लाइक एनिमल। तो बच्चे क्या बन जाते हैं? यदि ईश्वर से न जुड़े तो क्या बनेंगे? इरेशनल, अविचारवान। और क्या बनेंगे? अनवाइज, अबुद्धिमान। और क्या बनेंगे? अनगॉडली, अनीश्वरीय। और क्या बनेंगे? बैड, बुरे। और क्या बनेंगे? टोटल क्वालिटी, टोटली मिसगाइडेड पर्सन, TMP। और क्या बनेंगे? टोटली मिसगाइडेड मैनेजर, TMM। Like an animal, a bad human being is a curse for human society, totally unworthy and unacceptable to society. तो ऐसे बच्चे बन जाते हैं। तो बच्चों को सोचना है कि ऐसा बनना है, ईश्वर से जोड़ना है या बार्किंग डॉग से अपने आप को जोड़ना है। बच्चे जो बैठे हैं वो अपना विचार कर लें कि कैसा बनना है उन्हें। देखो, बच्चे के 3 क्लासरूम हैं। क्लासरूम नंबर 1 इज द होम, फर्स्ट सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। क्लासरूम नंबर 2 इज द स्कूल और यूनिवर्सिटी, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। क्लासरूम नंबर 3 इज द सोसाइटी, थर्ड सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। अब यहाँ जो पहला सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है, इसमें देखें कि मम्मी पापा बेटा बेटी सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। द फैमिली द प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो परिवार जो मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, मिलजुल कर प्रगति करते हैं। घर में गीता भी है, कुरान शरीफ भी है, बाइबल भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी है और इस घर के ऊपर दिव्य प्रकाश परमात्मा का और सारे अवतारों का प्रकाश है। सारी पवित्र पुस्तकें यहाँ पढ़ी जाती हैं और बच्चों को बताई जाती हैं। तो ऐसा घर 21वीं शताब्दी में हर एक का सारे संसार में ऐसे ही घर बनने चाहिए जिससे कि लड़ाई झगड़ा न हो। क्लासरूम नंबर 2 इज द स्कूल और यूनिवर्सिटी। द सेकेंड सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। स्कूल और यूनिवर्सिटी इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, guidance and leadership to students, their parents and the society in general. Let us make every child and youth both good and smart, a gift of God to mankind, a pride of the human race and a potential light of the world. इसके लिए हमें 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और 4 हमारे पिलर्स ऑफ एजुकेशन हैं। नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन एंड एलोक्वेंट स्पीच, ये 4 पिलर्स हैं। 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन और 4
बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एजुकेशन है, यूनिवर्सल वैल्यूज, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द वर्ल्ड एंड एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स। और ये समाज है, तो समाज में तो बहुत सिंपल है कि ईश्वर एक है, सारी किताबें एक परमात्मा से आई हैं, तो सारे संत और महात्माओं को ये बताना चाहिए, ऑल पीपल शुड प्रे टुगेदर सिंस देयर इज ओनली वन गॉड। सबको मिलजुल के एक साथ प्रार्थना करिए, तरह तरह के टोपे टोपियाँ साफा और तिलक छापे लगा के और दाढ़ी मूछे रख के ये साबित कर रहे हैं कि हम कितने डिफरेंट हैं, कितने अलग हैं। आज अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आज सबको मिलजुल कर एक होने की ज़रूरत है। लॉ, ऑर्डर एंड जस्टिस आर द अर्जेंट नीड ऑफ टुडेज सोसाइटी। यहाँ पर है द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ऑर्डर एंड जस्टिस मस्ट बी टॉट कंपल्सरीली फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, एवरी चाइल्डहुड, और फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड एवरी चाइल्ड मस्ट बी मेड लॉ अबाइडिंग, ऑर्डरली एंड जस्ट। महात्मा गांधी जी ने कहा था, if we are to teach the real peace in this world, if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children and youth. और नेल्सन मंडेला ने कहा था, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Paulo Freire ने कहा था, education changes the people and people change the world. और संसार के महान दार्शनिक विक्टर ह्यूगो ने कहा था, there is one thing stronger than all the armies in the world, and that is an idea whose time has come. वो विचार जिसका समय आ गया है, वो सबसे ताकतवर चीज़ है इन संसार में। Balanced education of all the three realities of life, that is material, human and divine, is the idea whose time has come. ये विचार है जिसका समय आ गया है कि हम तीनों तरह की शिक्षा बच्चों को दें और बच्चे तीनों तरह की शिक्षा पाएं, material, human and divine. मैं एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, और डॉक्टर कामरान, डॉक्टर कल्पना त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात बच्चों से कहने का। So we are extremely grateful to you for blessing the entire gathering with your kind and benevolent words. You have always been a source of great inspiration and treasure trove of divine knowledge. Once again, we thank you immensely, sir, for making this morning such a blessed one. And now I invite the teams from Gujarat and Rajasthan, for they wish to honor our respected founder manager, sir, for his decades of service to society and humanity at large in the field of education and building a world which is fit for children and generations yet to come. We invite Dr. Mahesh Bhai, Director, Gayatri Sanskar School, and Takshala Educational Sankul, Halwad, Gujarat, Sardar Patel Trust, Sardar Patel School, Junagadh, Gujarat, and Jayala School, Rajasthan. Mr. J.K. Thesia, who is the Director of Sardar Patel Trust, Junagadh, Gujarat, and Dr. Mohanji, who is the Director of Jayala School, Rajasthan. Be there. We thank you immensely, Team Gujarat and Rajasthan, for honoring the person who truly deserves it.
That is indeed a beautiful gesture from Team Gujarat and Rajasthan. Requested Principal Ma'am and requested Vice Principal Ma'am, you are kindly requested to be here on stage. The two teams, they wish to honor you as well. Take sir. That's an extremely beautiful gesture from the two teams. Thank you once again, Team Gujarat and Team Rajasthan. Ma'am. With this, we move on to the events of the day. We have Eureka Science Quiz Final, Cogito Ergo Sum Scientist Character Speak Prelims, Voila Debate Final, Rhetoric Extempore Prelims, Cogito Ergo Sum Scientist Character Speak Final, Asimov's Inspiration Fiction Writing, Mac Oration Teaching Module Prelims, Descartes Coordinates Maths Quiz Prelims, and Loggerheads Group Discussion Prelims. We extend our heartiest wishes and good luck to each of the participants that is present here. Good luck and good day. Dear all prelim rounds will be taking place in the basement rooms, room number 2, 3, and 4, as mentioned in the brochure, near the control room area.
All the participants of Cogito Ergo Sum Scientist Character Speak are requested to report to room number 3, basement, near control room for their event.
Lucknow, Dr. Jagdish Gandhi started City Montessori School in 1959, a non-profit organization that was set up as a laboratory to create world-minded and socially conscious citizens who would work for the welfare of humanity and its unity. Plato had said, "It is the idea that moves the world." Goethe says, "Life is action." The story of Dr. Jagdish Gandhi's life is refreshingly vibrant that encourages one to take charge, regenerate and renew. The concept of karma was introduced to him by his uncle Sri Prabhu Dayalji, who inculcated in him hope and to dream of a world where there will be Satyug, the divine civilization. His father took him to village temple where religious discourses and discussions took place, and his pious mother ingrained in him the value of complete connect with God at all times. Greatly influenced by Mahatma Gandhi, young Jagdish found not only the peaceful narrative of serving society, but also the burning fervor of resolution in the great man. He could fathom the power of the slogan of Jai Jagat or Hail the World, coined by the Mahatma and Acharya Vinoba Bhave to reform and restructure global society. He laid the foundation of a school where value of Vasudhaiva Kutumbakam, or Earth is but one country and mankind its citizens, is being nurtured through unique CMS broader, bolder education model for the 21st century. An education capable of saving humanity that draws heavily from the teachings of Baha'u'llah that says, among the greatest of all the great services that can possibly be rendered by a man to Almighty God is the meaningful spiritual education of children, building their character and inculcating in their tender hearts the love of God. He always felt that education is not filling of a pail, but the lighting of a fire. The school has educated students to respect the values of tolerance and has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, parents, and public. In recognition of this remarkable achievement, the school was awarded the 2002 UNESCO Prize for Peace Education. The school that began with 5 children and a borrowed capital of $10 in 1959 today has over 56,000 students, a Guinness World Record for being the largest school by pupils. He still works, sleeps, eats and entertains visitors in 12 by 14 square feet room where he first began his mission. All his personal belongings can fit into a suitcase. Dr. Gandhi, who has maximized expenses on his vision and minimized his personal needs, by religion he is Baha'i. By way of personal wealth, he has none. His fervent admirer and follower, his wife, Dr. Bharati Gandhi, he is supported in his vision by his principals from 18 CMS campuses, 2,000 teachers and 1,000 other workers of CMS. The De Rosio Award winner in the 20th century, the recognition of outstanding service to education and human enrichment, Dr. Gandhi argues, as universe is governed by laws of nature, humanity should also be governed by one law, and thus pioneered the idea of World Judiciary Summit. He constituted the World Unity Education Department to organize the international conferences of Chief Justices of the world since the turn of the century, with the recently concluded 19th International Conference of Chief Justices of the World on Article 51 of the Constitution of India. Staunch believer of Mahatma Gandhi's path of non-violence, Dr. Jagdish Gandhi's life has been governed by the saying of, "Let us not curse the darkness. Instead, light a candle." Member of the World Peace Prayer Society and a firm believer in the Japanese Kaizen theory of continuous improvement, Dr. Gandhi introduced the concept of quality control circles in education and is the founder chairman of the World Council for Total Quality and Excellence in Education. For bringing in this visionary concept in education, he was honored with the key to the city of Georgetown, USA.
This crusader for unity and peace, Dr. Jagdish Gandhi, has a class of his own, working on a thesis. True education releases capacities, develops analytical abilities, confidence in oneself, willpower, goal setting competency, and instills the vision that will enable oneself to become a self motivated agent of social transformation, serving for the best interest of the community. For nearly 6 decades now, in a real laboratory of a school called CMS and its community, focusing on real-time subjects in globalism, universal brotherhood, and world unity and peace, Dr. Gandhi has earned 5 honorary doctorate degrees, namely Honorary Doctorate Degree in Education in 2009 by Bashkir State Pedagogical University, Ufa, Russia. Honorary Doctorate Degree in Law bestowed by the University of Concepcion del Uruguay, Republic of Argentina in 2012. In the same year, another honorary doctorate degree in law given by the University of Mendoza, Republic of Argentina. Honorary doctorate degree by Inca Garcilaso University in Peru in 2014, and honorary doctorate degree by the National University of Mongolia in 2015. Lifetime Achievement Award by the Education World magazine in 2017, the prestigious Gusi Peace Prize in Manila, Philippines in 2011, the award, also known as the Asian Nobel Prize, is given to achievers of the world. And Soaring Above the Rest Award by the Council for the Indian School Certificate Examination, New Delhi, for his invaluable contribution to peace through education in 2014. Who could have imagined that a frail, bashful boy born in one of thousands of remote, poverty-stricken, backward villages of the state of pre-independent Uttar Pradesh in these past 60 years would have been able to create a wonderful experiment of immense value to educators worldwide, a story which has received global recognition, a story worth understanding by policymakers and schools worldwide. May CMS fragrance fill the sky, and its name endure forever and I. May its founders' ideals inspire, to strive, to seek, to ever aspire. May we uphold the good and fair in all that we do and dare. At home, at school, at play, in actions of the day. Our school is a temple of learning, where knowledge and wisdom rules, where we become the changes we dream of, our most beloved school. Our lessons are of peace and love. Our anchor is of spirituality. Our greetings for all is Jai Jagat. Our vision is of world unity, unique in the annals of education. Our founder is a one of a kind. We are the light of the world. CMS, the hope of mankind. May CMS fragrance fill the sky, and its name endure forever and
May its founders' ideals inspire to strive, to seek, to ever aspire. May we uphold the good and fair in all that we do and dare. At home, at school, at play, Really. in actions of the day. At home, at school, at play, in actions of the day. Really. Science knows no country because knowledge belongs to humanity and the thought which illuminates the world. Science is the highest personification of the nation because that nation will remain first, which carries further the work of thought and intelligence. A special device for people having problems in communication. This printer was initiated with a Canada-wide science fair, for which I was researching on the book, and I came across a book of Bliss and Bliss, which had a story of a 7-year-old girl. Okay, so I'm talking about AI robots which not create unemployment. So robots are kind of technology that is made by the human. It is made by humans. It is created by the human skills. For example, I am a delegate of India. I cannot go and say the delegate of Pakistan is very high, delegate of Pakistan is the greatest delegate. No, it will violate my foreign policy. See, you all know what happened in Doklam, like what China did and how India stood there as strong as a wall. You know everything about Doklam. So I, as delegate of India, cannot go in the UN and say that what China did was right, because it hurts my sentiments, it hurts my interests. So if anything which I say hurts my interest, the interest of my country, I cannot go and say it in a UN committee. Really. Really. So on behalf of BCM family, I would just like to say that we are really elated
because of this wonderful endeavor to bring so many youth from all across the globe together under one roof for a common purpose, that is propagation of harmony. So here I would like to quote a famous peace activist, Dr. Dai Sakwikeda, who says, a human revolution in just a single individual will help achieve a change in the destiny of a nation and further will help achieve a change in the destiny of all humankind. As you know, MACFAIR is an international festival of science, maths, technology and computer organized by City Montessori School, Mahanagar branch. We have many teams from India, many states of India and abroad, and they have come here for the 4-day long festival. Today evening we have the inauguration of this festival. We organize such competitions. CMS organizes competitions for every subject. Mahanagar organizes for 2 subjects. One year it is science, maths and computer, and another year it is history by the name of Reflections. So the main idea why we organize these competitions is to motivate students to create interest in all the subjects so that they study and develop excellence as a habit. See, when we started this MACFAIR, it was actually computer-oriented fair, wherein the students from different parts of the state could come and compete. Now gradually we increased our vistas, and now we find that it is not only mathematics and computers, it is encompassing all the branches of science, whether it is astronomy or physics or biology or chemistry or biotechnology, whatever. If it is science, it is MACFAIR. Ladies and gentlemen, we are very kindly agreed to grace the occasion despite her busy schedule. We are deeply grateful to you, ma'am, as your presence will boost the morale of the delegates. We welcome you, ma'am.
And here comes the principal, the convener of MACFAIR International 2018. Ladies and gentlemen, please do your work. Please put your hands together for such a beautiful procession. Principal and vice principal, the right custodians of the world, being followed by a group of young world parliamentarians. As they walk together, how aptly they convey the message: when the power of love overcomes the love of power, the world will be united. Ladies and gentlemen, I repeat, 79 teams with 686 members from India and abroad here to bond in with each other, pool their resources, talent in MACFAIR International. And the first team which walked was Sunrise English School from the land of Pashupatinath, Nepal. The agenda for the day is that technology will either liberate. The use of technology can determine the better future of mankind. Today, we will be following the UNA-USA rules of procedures by which each nation, by default, is a member of General Speakers list. So nations who wish to enroll themselves in the GSL, please raise your placards. The nations that are henceforth recognized are the French Republic, Sweden, Netherlands, Poland, Peru, Equatorial Guinea, Bolivia, Côte d'Ivoire, United States of America, United Kingdom and the Northern Islands, Kazakhstan, Kuwait, Ethiopia, and People's Republic of China. That being said, Delegate of the French Republic, you have the floor for 90 seconds. Thank you, sir. France, with its allies of NATO, has strived hard in order to take forward the levels of cybersecurity. France has been an epitome and hub for most of the technologies, and with great power comes greater threats. Probably which is why Microsoft Chief Executive Satya Nadella described France as, I quote, a country which is at the forefront of defining what this new era of technology will mean to our society globally, unquote. The French data privacy rules are a transposition of the Data Protection Directive. The General Data Protection Regulation, which has replaced the Data Protection Directive as of 25th May 2018, is applicable on the French territory, with transposition measures being necessary. In the meantime, data privacy remains regulated for most part of Law number 78 to 17 of 6th January 1978 on data processing, data files and individual liberties. Compliance with the French data protection framework remains a concern for the companies given the penalties imposed by the French data protection authorities and The participants of Eureka Science Quiz Final are requested to come up on stage and take seats. Eureka Science Quiz Final participants are requested to be here on stage, please. As a member of the European Union, France has implemented the NIS Directive 3 by 9th May 2018 and has identified vital sector subjects for specific Eureka Science Quiz Final participants are requested to be here on stage. Team code. With ever-growing online activity, reported instances of cybercrime is on the rise. I extend a very warm welcome to each one of you present here. MACFAIR is dedicated The team code T11, T16, S07B, S18, S11, S26, S03, S01, S16, T05. The logical structure of science is analogous to a spider's web. Start from anywhere and in the web and work inward. Eventually you come to the same core. Understanding this core of knowledge then is what science is about. Science is an ongoing search for truth,
a perpetual struggle to discover how Mohammad Aryan Tariq and Jay Saxena. T11. T16, Nilansh Agarwal and Udyan Tripathi. S07B, Ayushi Agarwal and Riya Kohli. S18, S18, Ojasvi Kaushik and Manas Singh Mehra. S11, Aradhya Agarwal and Utkarsh Sengar. S26, Mishmeet Singh and Anubhav Sharma. S03, Nakshatra Malhotra and Shubham Saini. S01, Dhwani Shah and Yashvi Nadi. S16, Ojasvi Gupta and Medika Parekh. And last, T05, Manas Sachdeva and Aditya Vishwakarma. All are there? We are extremely honored to have Ms. Aprajita Tripathi Ametsas, who is going to be the quiz master of Eureka Science Quiz Final. We request respected Principal Ma'am to kindly honor Ms. Aprajita Tripathi. Ms. Aprajita Tripathi is an engineer by profession and an MBA from IIM Kozhikode. She has over 12 years of experience with public policy, working as a director in KPMG, currently in Ministry of Finance. Her core expert areas include infrastructure, industrial policy, and public policy. She has also worked as a strategy consultant for campaigning for the Prime Minister in 2014. She is also an alumna of City Montessori School and is known for putting her 100% in whichever task she takes up. We welcome you, ma'am. And now we begin with the most awaited event of the day. Over to you, Aprajita, ma'am. A very pleasant good morning and Jai Jagat to all the respected judges, participants and audience. I am extremely delighted to announce that we are back with the finals of the Science Quiz Eureka. This is the round which will bring forth the ultimate winner. The winner of this round will be the winner of the entire quiz contest. Remember, there is only one first position and participation and efforts to reach it counts. Give your best and you will be awarded with what you deserve. I wish you all a very good luck, and we believe that each one of you is as deserving and capable. Now let's begin with the most awaited finals of the Science Quiz, Eureka. To begin with, let's introduce the teams who made it to the finals. Team T11, Team T16, S07B, S18, S11, S26, S03, S01, S16, and the last one, T05. Now let's start with our quiz. Namaskar and a very good morning to all of you for the inaugural session of MACFAIR 2022. Yesterday we all had a very gala celebration in this auditorium, and in front of us MACFAIR 2022 was unveiled and launched formally, and Eureka, the science quiz, happens to be the first event with which we are opening up MACFAIR 2022. So welcome all of you again, and looking forward to a very robust and energizing session with all of you. I hope there's enough excitement in the auditorium. How about the participants? No, I don't hear the excitement.
moving forward, I'll just, in some time, we'll just go over the details and the rules. I'd like to introduce my team members, my scorers and team keepers, Deepika ma'am and sir, and Shubh will be assisting me here with the buzzer round and in general, keeping time and ensuring that there is sanctity on stage. I would request the audience members to ensure that there is pin drop silence when a question is being put forward, because as we all know, if you try to support your team during the quiz, then that will be an invalid question and your team may lose marks. So please do not prompt answers. We will be passing questions to you as and when the teams are not able to answer the questions. Have you wondered why do we call quiz Eureka? Anyone has any idea? Yes, anyone from the audience? Eureka moment or is the aha moment, wherein you first know or it reveals to you a truth which was previously unknown to you, or a complex problem that you were trying to solve for a long time but could not. And as Archimedes told all of us, sometimes shouting is the best place where we get our best answers. So with that note, we're going to start with Eureka, and I hope that it is going to be as energizing as that aha moment. So let's start. All the best to all the participants. Can we please have the first slide so that I can explain the rules? As is visible to all of you, there are 3 phases. The first phase has participation with all the 10 teams. It has 3 rounds. The first round is science and news. The second round is personalities, phenomena and things. And the third round is general science. Each of this will, any right answer for all the 3 categories will fetch you a plus 10 marks. And there is no negative marking, and there is no buzzer round per se in phase 1. But in round 3 of phase 1, general science, questions will be passed in case the team is unable to answer their question. And the passing of questions will be through a buzzer round. So can you please check your buzzers once? Yeah, so the one who presses it first, the others will not be able to produce that sound. So switch it off. Team S18, can you try your buzzer? So the logic here is that the one who presses the buzzer, only that sound is heard and no one else's, even if you keep pressing, unless he lets go of it, the other buzzer sound would not come. Is that understood? Can you try yours? In phase 1. Can you just close yours? You'll have to release it to close it. Yes? I'm in phase 1, the first and second round does not have any passing. No, no pass. Can you please release your buzzers and let us not be an endless loop of checking. Thank you. And let's hope you don't play with it in the middle of the quiz competition. So moving forward, this is phase 1. And each team will have 1 question. In case they answer it correctly, they get 10 points. So in essence, in phase 1, every team answers 3 questions, unless there is a pass question coming their way, which is only in round 3. After phase 1, the scores will be tabulated, and 3 teams will have to unfortunately leave us. And 7 teams will move on to phase 2. Phase 2, if you can see, has 4 rounds. Science and news, personalities, phenomena and things, general science, and mixed bag. Each of this will have a question directed at the team. Correct answer gets you a plus 10. Again, in round 3, we have, so we'll discuss the pass when we move to phase 2. Now, phase 3,
Out of the 7 teams, again 2 will leave us for phase 3, and only 5 teams will move on to phase 3. Now those 5 will battle it out for the top 3 positions. And here we have mixed bag, rapid fire, and the audio-visual quiz. Rapid fire, each team will get 30 seconds, and they can answer as many questions as they can in 30 seconds. There is no negative marking here. In audio-visual, we have negative marking, but we'll explain to it when we get to it. Now, given that this is going to be a long and stretched session for over 2 hours, expecting everyone to keep on their best behavior, do not prompt, do not mislead, and please don't play with your buzzers if the round is not on. And audience, there will be questions for you. Please participate. Please help your teams, but please do not prompt answers. All right, with that, can we start the first round? Can you give a big round of applause for all the participants? I heard that the prelims were so tough that it was meant for elimination and not for selection. And therefore, these teams really know their subject very well. So I'm looking forward to a very energizing session. All the best, all of you. The first question is for T11. Name the planetary defense mission launched by NASA this year to redirect an asteroid in space. Ma'am, DART. Option C, DART. Option C is correct, and team T11 gets 10 points. And before we move on to the next question, each question, the team has a maximum of 10 seconds to answer the question. So T11 gets 10 points. Moving on to T16. Next question. Clara, an artificial intelligence bot which helps to self-check COVID-19, has been introduced by which country? USA, UK, Canada, Sweden. From UK. Unfortunately, that's the wrong answer. The correct answer is United States. Teams T16 gets 0 points. S07B question for you. What is the accuracy of National Atomic Time Scale, which was launched on 4th January by PM Modi? 2.8 nanoseconds, 20.8 nanoseconds, 2.8 milliseconds, 20.8 milliseconds. Option A, 2.8 nanoseconds. And that is correct. And team S07B gets 10 points. Next question for S18. What is B1.617, which has been in news recently? Air-to-air missile, asteroid discovered by NASA, COVID-19 variant, hydrogen fuel cell. Ma'am, B. Option B, asteroid discovered by NASA. I could not hear it correctly. Option B, ma'am. Option B, unfortunately, is wrong. The correct answer is COVID-19 variant. Anyone from the audience can tell me what it is popularly called? B1.1617. No? It's Delta variant. The one we hear of Delta variant, along with the Kappa variant, are basically B.1617. So team S18 gets 0 points. Next question is for S11. Which one? But in round 3 of phase 1, general science, questions will be passed. Within and without, it is not desirable that a man be left alone without knowledge or skills, for he is then but a barren tree. Therefore, so much your capacity and capability allow, you must deck the tree of a being with the fruits such as knowledge, wisdom, and it must broaden the child's perspective to globalism. तो प्यारे बच्चों, आपको बचपन से ही ये चीज़ें सीखनी है कि आप be ahead of classes through hard work and through merit.
तो अपने क्लास में अव्वल आओ,